Welcome back to Metal Gear Solid. This is part 7. This part we are going to be focusing on a prison escape. Now why prison escape? Because वो story का part है. मैंने नहीं डिजाइन की गेम. But yeah, यहाँ पे हम intentionally पकड़े जाएंगे. Not intentionally, but अपने पास कोई चारा भी नहीं है पकड़े जाने के अलावा. But this part is necessarily going to be a prison escape जहाँ पे हम भागेंगे. Very interesting chapter indeed. So yeah, let's continue. Don't move! It's hard to miss when you're this close. Toss your weapon over here. Slowly. You are a fool to come back here. Stupid man. A lady sniper, huh? Didn't you know that 2/3 of the world's greatest assassins are women? Do you want to die now? Or after your female friend? Which will it be? I'll die after I kill you. Is that right? Well, at least you've got spirit. I am Sniper Wolf, and I always kill what I aim at. You're my special prey. Got it. I've left my mark on you. I won't forget it. Until I kill you. You're all I think about. Take him away. Don't kill me yet. I'm alive. Leave it to me. I want no more accidents like that, don't you? Yes, he's my target. Mine. Can you hear me, Solid Snake? He's tougher than I thought. Do you know who I am? I always knew that one day I would meet you. The man who stole what was rightly mine. The man who stole my birthright. Me? I'm the man you stole everything good from. And now, after the sacrifice of our brothers, after 30 long years, finally, the two of us meet. The brother of light and the brother of dark. Do you need his DNA too? Yes. I want a sample while he's still alive. We need it to correct the Genome Soldier's mutations. Then we'll be able to cure them? No. We still have to get our hands on Big Boss's DNA. Have they given in to our demands yet? Not yet. They won't give in. They're all hypocrites, every one of them. Is that your opinion as a Kurd? They always put politics first. That's right. That's why they want to avoid any leak about their precious new nuclear weapon. Boss, it looks like our friend is awake. There definitely is a resemblance, don't you think, little brother? Or should I say, big brother? I'm not sure. Anyway, it doesn't matter. You and I are both the last surviving sons of Big Boss. It's me,
Really? Then what? Oof, those idiots! All right, Raven. I'll be right there. They're not responding to our demands. We launched the first one in 10 hours as planned. Damn Americans. Looks like you read them wrong. Something's funny. Normally the Americans are the first ones to the negotiating table. They must think they've got something up their sleeves. So it's come down to it, has it? We're going to launch that nuke and ride it all the way into history. I've got to take care of some launch preparations. You're in charge here, Ocelot. What about you? Want to stay for the show? I'm not interested. It's time to feed the family. So you prefer your wolves to my show, huh? Ocelot, don't screw up like you did with the chief. Yes, I know. That was an accident. I didn't think a pencil pusher like him would be so tough. Well, his mental defenses were reinforced by hypnotherapy. Boss, what about that ninja? He's killed 12 men. Whoever he is, he's some kind of lunatic. Bastard took my hand. How could he have gotten in here? Perhaps there's a spy among us. Mantis is dead. We've also got to find out what killed Baker and Octopus. We're short-handed, so make this little torture show of yours as short as possible. Torture? This is an interrogation. As you wish. See you later, brother. Your woman is still in this world. Meryl. Catch you later, handsome. Once she picks a target, she doesn't think about anything else. Sometimes she even falls in love with them before she kills them. Finally, just the two of us. How are you feeling? Not bad. Caught a nice nap on this revolving bed of yours. Too bad I was sleeping alone. I'm glad to hear that. This is some bed, all right. I'm about to show you some of its nicer features. Where are my things? Oh, don't worry. They're all there. Washington was taking quite a chance sending you here. Someone must have had a lot of faith in your skill, huh, carrier boy? So, Metal Gear's armed with a new type of nuclear warhead, huh? Why don't you go ask Campbell for the full story? The Colonel? By the way, you got an optical disc from President Baker, didn't you? What if I did? Is that the only disc? There's no other data? What do you mean? There's no copy? If not, that's fine. Is Meryl okay? She's not dead yet. Wolf must have been feeling generous. But if you want her to stay that way, you better start answering my questions right now. You were holding one card key. Where are the other two? What's the trick behind that key? Trick? That weasel of a president said there's some kind of trick to using the key. Hell if I know. I see. No problem then. We're going to play a game, Snake. And we'll find out what kind of man you really are. When the pain becomes too great to bear, just give up and your suffering will end. But if you do, the girl's life is mine. Press the circle button repeatedly to regain your strength. When you've had enough, press the select button to submit. When your life reaches 0, the game is over. There are no continues, my friend. Don't even think about using auto fire, or I'll know. I'm going to run a high voltage electric current through your body. If it's just for a short time, it won't kill you. You're a tough guy, Snake. But I've got some bad news for you. You're no POW. You're a hostage. There's no Geneva Convention. No one is coming to save you. Starting to feel a little scared. Good. You should be. Okay, let's get started. Okay, here we go. Select button to submit. When your life reaches 0, the game
आई हेट दिस पार्ट यार, फक। ओके, यहाँ पे तुमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ सर्कल दबाना है, बट एकदम मैश करना है तुमको। आई एम नॉट इवन किडिंग, बहुत जल्दी से मैश करना है। अगर तुम आराम से बटन दबाओगे तो कुछ नहीं होगा, मर जाओगे How तुम। did you like that? Shall we go again? फिर से करना पड़ेगा। ये 4 बार होता है, ओके। एंड मेक श्योर टू रियली मैश इट, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे हार गए या अगर यहाँ पे मर गए तो प्रीवियस चेक पॉइंट बहुत पीछे का आता है, बहुत, एंड आई मीन बहुत पीछे का। Had enough yet? सो वो बहुत We're प्रॉब्लम हो not जाती है। finished ओके, सो yet. मेक श्योर टू रियली डू दिस प्रॉपरली। Now after this I can go on a little deep and actually explain the story and narrative of the game as well. जो भी cutscene अभी तुम लोगों ने देखा, that actually leaves a lot of questions and I will try to answer them properly. These people, these things, ये actual में कौन है, Want me to go what kind on? of a terrorist organization is this, Can and you what take one problem more? they have with the Pentagon and the US military and the US itself, वो सब का सब मैं ट्राई करूँगा एक्सप्लेन करने का once I escape this torture chamber. That is, I think this should be it. Trust me, this is not as easy as it looks. Okay, so please take it seriously. You're a strong man. Well, that's enough for now, I think. You're the boss's brother, all right. Your brother, he's an amazing man. Who else could shoot down 2 F-16s with a Hind helicopter? The Les Infanteries project was not a total failure. He is the one man who could make my dream into a reality. Looks like I got a roommate. The DARPA chief? What a stench. Okay, so who do we have here? It's the freaking DARPA chief. तू कौन है बे? ओ ये यही बंदा है। मेरल ने इसी के कपड़े चुराए थे। लॉल। पहले तो मैं कैम्बल को फोन लगाऊंगा, साला चल क्या रहा है यहाँ पे? Snake, are you okay? I've been better. How's Mara? They've got her. Damn. Snake, the government has decided not to give in to their demands. We're trying to buy some more time. Come on, Colonel. Why don't you stop playing dumb? I'm sorry about Meryl, but I want the lies to end now. What are you talking about? Metal Gear was designed to launch a new type of nuclear warhead, wasn't it? You knew it all along, didn't you? Why did you try to hide it? I'm sorry. Can't tell the grunts, huh? You've changed a lot. Metal Gear, secret advanced nuclear weapons research. Does the White House know about this? How deep does it go? As far as I know, as of yesterday, the president had not been briefed about the Rex project. Need-to-know basis, is that the idea? These are sensitive times. Even subcritical nuclear tests are causing quite a stir. Plausible deniability, huh? Yes. And tomorrow, the president and his Russian counterpart are scheduled to sign the START 3 Accord. I get it. That's the reason for the deadline. That's right, Snake. And that's why we can't let this terrorist attack go public. We still haven't even ratified START 2 or dealt with the issue of TMDs. This has to do with the president's reputation and America's place as the dominant superpower. So patriotism is your excuse for circumventing the Constitution? Please, Snake, just stop them. Why should I? Because you're the only one who can. In that case, tell me the truth about this new type of nuclear warhead. I told you before, I don't know the details. I don't believe you. If the situation is so serious, why don't you give in to their demands?
Let them have Big Boss's remains. You see, Or is there some reason that you can't do that? Something you haven't told me about? Publicly, the president has been very vocal in his opposition to eugenics experiments. We don't want the existence of the genome army to go public. And that's the only reason? Huh. Hell with you. I'm sorry. The corpse of the DARPA chief is lying right here next to me. Oh man. But it's strange. He looks and smells like he's been dead for days. All his blood's been drained out too. Drained. Maybe to slow down decomposition? I have no idea. But the chief only died a few hours ago, right? Right, but he's already started to decompose. What could it all be about? Something in his blood that they wanted? I doubt it. Just the nanomachines in the transmitter. Did the chief tell them his detonation code? I'm afraid so. It looks like they've got both codes and are nearly ready to launch. Damn. Is there any way to prevent it? It seems that there's some type of emergency override device that can cancel out the detonation code. It's a countermeasure that Arms Tech installed secretly. You have to unlock it with 3 special card keys. And where are those keys? I've got one of them. I don't know where the other 2 are. Besides, I'm locked up here. We've got no choice. Forget about the keys. Your top priority now is to destroy Metal Gear itself. I'm sorry to have to lay it all in your lap, but you're all I've got. Bust out of there and get to the communications tower. Also, What? I know it's asking a lot. Meryl, right? Yeah. I'll save her. Now let's discuss about the situation Thanks. over here. So US has been developing nuclear warheads, and there is a certain group of people who actually are taking these decisions. These decisions are not also are being kept from the president himself. President तक को भी ये चीजें पता नहीं है. It is more to have a dominance over other countries, I guess. That is how America stays dominant and stays the superpower, the greatest nation on the earth. तो रॉय कैम्बल जो एक्चुअल में अपने कर्नल कैम्बल है, उनको भी पता था इसके बारे में, बट ही डिडंट से एनीथिंग. अभी वो क्यों, वो भी अभी तक नहीं पता. बिकॉज मे बी ही हैड एन अल्टीरियर मोटिव और समथिंग. क्योंकि अगर तुमको याद होगा तो रॉय कैम्बल को भी इस मिशन के लिए रिटायरमेंट से बाहर लाया गया था, सेम एज सॉलिड स्नेक. हम जैसे ही he was taken out of retirement for this specific mission. Now अभी होता ये है कि the terrorist group that we are talking about, Liquid Snake and वो सब, they call themselves the sons of Big Boss. और उनकी डिमांड्स ये है कि उनको बेसिकली बिग बॉस की बॉडी चाहिए, जो मेटल गियर 2 के बाद यूएस ने बरामद कर ली थी जब सॉलिड स्नेक ने उसको हरा दिया था, उसको मार दिया था. Now we are going to do the same thing in gameplay wise while I explain. तो या बिग बॉस को हराने के बाद यूएस गवर्नमेंट ने उसकी बॉडी बरामद कर ली थी, एंड दे वर डूइंग all kind of experiments on him because he was the perfect soldier. Why he was the perfect soldier? Because of his mission in Metal Gear Solid 3. Okay, and यहाँ पे मैं बिग बॉस की बात कर रहा हूँ. बिग बॉस actually is the main villain for Metal Gear 1 and Metal Gear 2. Actually Metal Gear 2, Metal Gear 1 में जो विलन होता है वो होता है वेनम स्नेक. अभी यहाँ पे बहुत सारे स्नेक है. ओके, अब ये सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, बिग बॉस हो गया, फिर बिग बॉस जो खुद एक नेकेड स्नेक नाम था उसका मेटल गियर 3 में, एंड there's also venom snake, there's also solid snake. तो मैं उसके बारे में डीप नहीं जाऊंगा. मुद्दा ये है कि वेनम स्नेक बिग बॉस जिसका नाम नेकेड स्नेक है, उसके गुजर जाने के बाद, जो एक्चुअल में वो गुजर जाता है बाद में, उसके गुजर जाने के बाद उसकी जो बॉडी थी, उस बॉडी के तहत उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए, एंड वो एक्सपेरिमेंट से उन लोगों ने बहुत सारा डेटा एक्सट्रैक्ट किया. उससे एक प्रोजेक्ट बना था लैस इन्फान थेरेप्ले करके, जिससे जेनेटिकली इंजीनियर्ड बिग बॉस के डीएनए से बच्चे बनाए गए. उन में से 2 बच्चे ही जी पाए. उन 2 बच्चों में से
एज यू कैन गेस ये दो बच्चे हैं वो, एक था सॉलिड स्नेक एंड एक था लिक्विड स्नेक। एंड ये दोनों बेसिकली एक्चुअल में बच्चे भी नहीं है, ये दोनों क्लोन्स है। इनको जन्म देने वाली माँ बेसिकली जो जो मतलब पेरेंट वूम थी, जिसने सरोगेसी We're not लाइक finished जिसने yet. जो सरोगेट मदर थी, क्या बोल रहा हूँ मैं, सरोगेट मदर थी, वो ईवा नाम करके एक लड़की थी जो अपने को मेटल गियर सॉलिड 3 में मिलेगी। सो शी वॉज ऑलवेज देयर। एंड दो परफेक्ट सोल्जर्स बनाने का एक्चुअल में प्लान था बाय पेट्रियट्स। अभी Still पेट्रियट्स okay? कौन है मैं Want me to आई go एक्सप्लेन on? बाद में, बट Can you जस्ट मेक take श्योर कि one ये more? सारी यूएस गवर्नमेंट के थ्रू की गई हुई चीज़ें थी। Now, US government later on, with the DNA of Big Boss, created Foxhound, and they did genetic operations, and created genome soldiers, जो एक्चुअल में बिग बॉस के डीएनए से बने थे सोल्जर्स, जिनके पास हाइटन स्ट्रेंथ एंड हाइटन हियरिंग एंड मतलब You're a एक्सीलेंट strong man. काबिल तारीफ Well, एबिलिटीज that's थी। enough for now, एंड partner. उसी से उन्होंने फॉक्स हाउंड शुरुआत की थी। फॉक्स We हाउंड live के in a ही sad मेंबर्स है ये, age. लिक्विड स्नेक हो Imperialism, गया, फिर totalitarianism, साइकोमैंटिस हो गया, बाद में perestroika. उन्होंने ऑसलॉट को भी 20th रिक्रूट कर century लिया Russia has had its share of मेटल problems, जब but at मेटल least गियर they को had an तबाह करने के ideology. बाद, मतलब बिग बॉस को Russia हराने के today बाद, has nothing. जब They're struggling between freedom and तुम्हारा order, and with that struggle, सॉलिड the स्नेक spirit of nationalism एंड has been रॉय conquered. कैम्बल दोनों The के दोनों boss has a रिटायर हो गए close थे। friend high up in the यूएस Russian गवर्नमेंट government. वेंट ऑन एंड He's रिक्रूटेड currently the head लिक्विड of टू Spetsnaz. गाइड द न्यू He's फॉक्स agreed हाउंड to यूनिट। purchase this new बट nuclear वहाँ पे weapons system. सीन क्या हुआ The कि high end was just a down लिक्विड ने payment. विद्रोह करना चालू कर दिया। So you're in एंड this देन for ही money? सेड I कि don't जो need यूएस money. गवर्नमेंट जो I पेट्रियोट्स want से Russia to be लाइक reborn, to lead कंट्रोल a की जा रही है, brave अभी ये new पेट्रियोट्स world कौन है, order. आई एम गोना एक्सप्लेन इट लेटर एज वी गो इनटू मेटल गियर सॉलिड 2। बट उन्होंने बेसिकली यूएस को एकदम एक तरह से कब्जा, लाइक एक तरह से कंट्रोल करके रखा है। एंड लिक्विड वांट्स टू फ्री द यूएस फ्रॉम दोज पेट्रियट्स। लिक्विड की मांग ये है कि ही वांट्स द कमोटोस बॉडी ऑफ बिग बॉस, जो उसको लगता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर पेट्रियट्स उसको इस्तेमाल करने लग गए देन दे कुड बी वेरी डेंजरस, एंड वो बेसिकली दुनिया तबाह कर देंगे। एंड ही वांट्स टू यूज दैट बॉडी टू क्रिएट मोर जीनोम सोल्जर्स फॉर हिमसेल्फ एंड टू टेक ओवर द वर्ल्ड। You okay, Snake? सो या Yeah, nothing new to report. Snake, is there anything I can do? Yeah, my arm hurts. Poor Snake. I'll increase the level of painkillers in your blood. Okay, but you can leave out the Benzedrine. That stuff makes me too frisky. I guess you're not feeling too bad after all. Snake, put the controller up against your arm. What? Don't worry, it'll feel good. Huh? Okay, here I go. How does that feel, Snake? A little better? How did you do that? I stimulated your muscle fibers with the nanomachine cilia. That's about all I can do for you. Naomi, please talk to me. Say something to take my mind off the pain. What can I say? Anything. I'm not a very good talker. Please. Tell me about yourself. Myself? That's a tough one. Any family? That's not a happy topic for me. I don't have any family. No. Wait. There was a man who said he was my father. Where is he? Dead. By my own hand. Big Boss. What? Big Boss? I had no idea. There was no way you could. It happened in Zanzibar 6 years ago. Only Snake and I know the real truth of what happened there. So, is it true? Was Big Boss really your father? That's what he said. That's all I know. And you were able to kill him, knowing that? Yup. How? He wanted it. Besides, some people just need killing. That's patricide. Yup. That's the trauma that Mantis was talking about. The one we share in common. Is that why you left Foxhound? Let's just say that I needed to be alone for a while, and Alaska was the perfect place. Snake. I didn't have a real family either. Just a big brother who put me through school.
We weren't even blood related, and he was much older than me. Where is he? He's dead. I'm sorry. Snake, is there a woman in your life? After you've been through as many wars as me, it's hard to trust anyone. Friends? Roy Campbell. You're still calling me friend? Is that it? No. There was another. Frank Yeager. What? Big Boss's most trusted lieutenant, and the only member of Foxhound ever to receive the code name Fox. Gray Fox. I learned a lot from him. But didn't you try to kill each other? It's true. We did, in Zanzibar. But it was nothing personal. We were just professionals on opposite sides, that's all. And you still call yourself friends? Hard to believe. War is no reason to end a friendship. That's insane. I first met him on the battlefield. He was being held a prisoner of outer heaven, but he didn't look like a prisoner to me. He was always so cool and precise. I was still green, and he showed me the ropes. You knew him well? No. We never talked about our personal lives. Sort of an unwritten rule. The next time I saw him on the battlefield, we were enemies. We were fighting barehanded in a minefield. I know it sounds strange to most people, but we were just two soldiers doing our jobs. It's like a sport. Men and their games. You're like wild animals. You're right. We are animals. So if you were friends, then how do you explain the ninja's behavior? I don't know. It's your genes. They make you predisposed towards violence. You really like talking about genes, Naomi. Why did you get into genetic research anyway? I never knew who my parents were, or even what they looked like. I guess I got into genetics because I wanted to figure out why I am the way I am. So you studied about DNA? Yeah. I thought if I studied my genetic structure, I'd find out who I really was. I thought that by analyzing a person's genetic information, I could retrieve the blank spots in that person's memory. Memory is stored in DNA? We're not sure, but we know that a person's genetic fate is determined just by the sequence of the 4 bases in their DNA. So what about my fate? You know my DNA sequence, don't you? Your fate? I'm sorry, I have no idea. Of course not. You're a scientist, not a fortune teller. Now if you could sense, Naomi is acting a little weird. अभी वो क्यों? क्योंकि उसका खुद का एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है आगे जाके, and we'll explore that also. और yeah, as you can see, जॉनी का पेट खराब हो गया. By the way, his name is Johnny Sasaki. वो वही बंदा है जिसके कपड़े चुराए थे इसने मेरिल ने, एंड उसको गेम में हमेशा लूज मोशन लगते रहते. इट्स अ वेरी फनी कैरेक्टर. और अपने को यहाँ से निकलना है. यहाँ पे अभी अगर मैं यहाँ पे बेड के नीचे छुपूँ, देन मोस्ट प्रॉब्ली वो लाइक घबरा जाएगा. देयर आर मल्टीपल वेज यू कैन एस्केप. वन इज लाइक दिस कि वो जब तक आए तब तक इफ ही फाइंड्स नो वन हियर इन द सेल, ही विल ओपन द डोर, एंड जब वो अंदर आए अपन उसको नॉक कर सकते हैं. या फिर वी कैन डू दिस वे. बेसिकली हम ऑटोकॉन की मदद लेने वाले हैं इस वाले सेक्शन में. It's me, Otacon. Wow, they even captured you. Hurry, get me out of here. Let me go, that hurts. Hurry up. Is that how you ask a guy a favor? Let me go. Jeez, it's like an animal's cage. Oh, what a smell. Because of him. Yeah, it's the Derpa chief. You don't hurry up and get me out of here, I'll be laying next to him. Those bastards. This lock won't open with a security card. You need a key like the soldiers carry. So what are you doing here then? I thought you might be hungry. If you need more food, I can bring some more later. Also, I got you this level 6 card. It'll get you out of that torture room. Here, take this too. What's this? It's a handkerchief. I got it from Sniper Wolf. Why? I don't know why, but she's nice to me. Sounds like Stockholm Syndrome to me. I was taking care of the dogs here.
After the terrorists took over, they were planning to shoot all the dogs. But Sniper Wolf stopped them. She even let me feed them when I asked. She likes dogs. She must be a good person. Please don't hurt her. Wake up, you idiot. She's the one who shot Meryl. Well, that's all I can do. They're planning to launch a nuke. I've got to stop them. Then you have to get past the communications tower. First, you have to get me out of here. Come on, I'm trying my best. That guard's got the key. You'll have to take him out. Give me a break. I'm no soldier. I can't take anybody out. You have to. I'll be killed. Oh, jeez. He's coming back. See you later. Wait. ये हरामखोर प्यार में पड़ गया. Anyways, just lie down, use the ketchup immediately before he sees. मतलब जॉनी देखने से पहले केचप यूज कर लो, नहीं तो अगर जॉनी ने केचप तुमको यूज करते हुए देख लिया देन वो लाइक बिलीव नहीं करेगा, वो उल्टा हंस लेगा अपने पे. सो या केचप यूज कर लो ताकि उसको ऐसा लगे कि हम मर गए सेल में. ही विल सी अस एंड ही विल डेफिनेटली रश इन टू हेल्प, या देखने के लिए कि एक्चुअल में हुआ क्या है. देन वी कैन नॉक हिम आउट एंड एस्केप. जब उसने देख लिया, अगर बाय द वे सारे तरीके फेल हो जाते हैं ना तो इन एनी वेज ग्रे फॉक्स मतलब निंजा, साइबोर्ग निंजा आएगा एंड ही विल बेसिकली बेल अस आउट. यहाँ पे आओ एंड उसको 2 बार गिरा दो, ही विल नॉक आउट एंड यू कैन कंटिन्यू बेसिकली एस्केप. ओके, नाउ यू कैन कंटिन्यू एक्चुअली आराम से. राशन उठा लो एंड या की कार्ड इस्तेमाल कर लो. नाउ वी कैन एक्सेस मोर डोर्स अभी विद द लेवल 6 की कार्ड. यहाँ पे एक चीज़ करनी है तुमको, जैसे ही तुम इसको उठा लो राइट, कपड़े बदल लो. ऑसोलॉट ने एक्चुअल में एक बॉम्ब प्लांट किया होता है अपने गियर में. सो इमीडिएटली स्विच टू योर गैजेट्स एंड वहाँ पे एक बॉम्ब होगा, उसको फेंक दो एंड या दैट्स इट. अगर वो फट जाता तो तुम उधर ही मर जाते. That was a close one, Snake. Ocelot, you'll pay for that. नाउ जो लिक्विड का ग्रुप है द रोग फॉक्स हाउंड मेंबर्स, जो खुद को सन्स ऑफ द बिग बॉस बुलाते हैं, सन्स ऑफ द बॉस बुलाते हैं, उनमें ना 6 मेंबर्स है इन टोटल. उसमें से पहला लिक्विड स्नेक है, दूसरा ऑसोलॉट है, तीसरा स्नाइपर वुल्फ है, चौथा साइको मैंटिस है, पांचवा वल्कन रेवन है एंड छठा है डीकॉय ऑक्टोपस. अभी 5 के 5 से अपन मिल तो चुके हैं, बट छठा जो है डीकॉय ऑक्टोपस उससे अपन नहीं मिले, या फिर वो दिखा था लेकिन हम लोगों ने कभी नोटिस नहीं किया. सो जो डार्पा चीफ था, जो स्टार्टिंग में गेम के स्टार्टिंग में जो डार्पा चीफ जिसको अब हार्ट अटैक आया था, दैट वाज एक्चुअली द डीकॉय ऑक्टोपस. वो एक्चुअल में स्नेक की ही वेट कर रहा था वहाँ पे बाय द ऑर्डर्स ऑफ लिक्विड स्नेक. लिक्विड स्नेक एक्चुअल में चाहता था कि स्नेक इतना आगे आ जाए and to do that he actually planted decoy octopus to in place of DARPA chief. Actually में he wanted to know एक्चुअल में सॉलिड स्नेक को कितना पता है ऑपरेशन के बारे में, और इफ़ ही नोज एनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस ऑपरेशन और अबाउट द मेटल गियर सॉलिड रेक्स. तो उसने एक्चुअल में डार्पा चीफ को एज अ एसोसिएट वहाँ पे प्लांट किया था. लेकिन हुआ क्या था कि फॉर सम रीज़न, वी स्टिल डोंट नो व्हाई, बट फॉर सम रीज़न डार्पा चीफ मर गया स्नेक के कांटेक्ट में आते ही. अभी ये क्यों हुआ ये अभी तक अपने को पता नहीं है, आगे चल के पता चलेगा. सेम हैपन विद केनेथ बेकर ऑल्सो. सो गेम के एकदम स्टार्टिंग सेक्शन में ही अपन ने 6 में से एक बंदा सन्स ऑफ द इसका सन्स ऑफ द बिग बॉस का मार दिया. बाकी बचे 5, उनमें से साइकोमैंटिस को अपन ने निपटा दिया है. फिर उसके बाद वल्कन रेवन से एक बार भिड़ चुके हैं अपन. वी हैव ऑल्सो यू नो टैंगल्ड विद क्रॉस्ड बोन्स विद स्नाइपर वुल्फ ऑल्सो. अभी आगे जाके वी आर गोइंग टू डिफीट स्नाइपर वुल्फ एंड देन वी आर गोइंग टू डिफीट वल्कन एज वेल. वी आर नॉट गोइंग टू किल ऑसोलॉट, क्योंकि ऑसोलॉट आगे जाके बहुत बड़ा कैरेक्टर बनता है, स्पेशली इन मेटल गियर सॉलिड 2 एंड मेटल गियर सॉलिड 4. सो या इन टर्म्स ऑफ लिक्विड इज द मेन विलन जिससे अपन आगे जाके लड़ेंगे. लिक्विड की मांग है कि ही वांट्स द
Yamamoto's body of the big boss, and he also wants $1 billion in compensation. अभी इतना सारा पैसा एंड विद द मेटल गियर रेक्स वो एक्चुअल में उसकी स्कीमा जो डेटा है उसके साथ ये करने के वाले थे एक्चुअल में वो अगर तुम लोगों ने ऑसलॉट के इंटरोगेशन वाला सीन अगर ध्यान से देखा तो they were planning to sell this information to a Russian buyer who is supposed to be a friend of Big Boss. उसका नाम by the way Sergey Gurlovich something like that वो है. Actually he is mentioned here but he appears in Metal Gear Solid 2. He is a very important character in there. So वैसे ये like उस तरह से ये बहुत पैसा बनाने वाले थे. Now जैसे कि कर्नल ने कहा कि यूएस एक्चुअल में एक भी रुपया नहीं देने वाला इनको लाइक दे आर नॉट गोना बेड टू लिक्विड्स डिमांड्स सो मोस्ट प्रोबेबली लिक्विड बेसिकली 10 दिनों में एक न्यूक्लियर अटैक करने वाला है या 10 घंटे में आई गेस मैंने लाइक प्रॉपर्ली सुना नहीं बट ही इज गोइंग टू अटैक वेरी सून अगर यूएस अग्री नहीं करता तो विच दे विल नॉट बिकॉज दे आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय पेट्रियट्स अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा हिंट दे सकता हूँ कि पेट्रियट्स एक्चुअल में एक ग्रुप ऑफ पीपल हुआ करते थे पिछले बहुत टाइम पहले जो कि बिग बॉस के द्वारा काम करते थे लाइक बिग बॉस वाज द हेड बट नाउ दे हैव बीन रिप्लेस्ड बाय हाउ वुड आई से दिस विदाउट स्पॉइलिंग दे आर रिप्लेस्ड बाय मशीन्स लेट्स जस्ट से दैट ओके सो दे आर नॉट अ ग्रुप ऑफ पीपल दे आर देख लो अभी क्या है but they are not real basically that's what I'm saying and इतनी बड़ी गवर्नमेंट इतने बड़े स्टेट का इतने बड़ी कंट्री का डिसीजन पेट्रियट्स के हाथों लगना who are not even human is very dangerous तो yeah that's what's happening now I know कि ये बहुत ही इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है तुम लोगों के लिए so I'm just gonna break this down in a very simple terms liquid actual में sons of Big Boss, Sons of Boss को कंट्रोल करता है which is a group of organization including of 6 members basically okay एक पहला Liquid Snake दूसरा Psycho Mantis तीसरी Sniper Wolf चौथा Vulcan Raven पांचवा Ocelot और छठा था Decoy Octopus जिसमें से अपन अभी 2 को मार चुके हैं और 4 बचे हैं जिनको अपन आगे जाके भी मारेंगे उनमें से Liquid और Ocelot तो मैं कुछ बताऊंगा नहीं क्योंकि that would be a spoiler but yeah right now यूएस एक्चुअल में अपना न्यूक्लियर प्रेजेंस इनको बताना नहीं चाहता क्योंकि अगर लिक्विड मिसाइल न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर देता है तो दुनिया को पता चल जाएगा कि यूएस एक्चुअल में लोगों के पीठ पीछे न्यूक्लियर टेस्ट एंड न्यूक्लियर आर्म्स एंड न्यूक्लियर डिटरेंस वेपन्स बना रहा था नाउ व्हाई इज दैट अ प्रॉब्लम जब पहला कोडेक कॉल हुआ था कैम्बल के साथ अपने कर्नल के साथ वहाँ पे हम लोगों को पता चला था अबाउट अ स्टार 3 ट्रीटी अभी स्टार 3 ट्रीटी इज एक्चुअली अ रियल वन जहाँ पे 2 सुपर पावर्स बेसिकली रशिया एंड यूएस दोनों मिल के ये डिसाइड करते हैं कि हम अपने न्यूक्लियर लाइक अपने न्यूक्लियर वेपन्स थोड़े करके कम करेंगे न्यूक्लियर रिसर्च एंड न्यूक्लियर डिटरेंस वेपन्स थोड़े करके कम करेंगे और जितने ट्रीटीज साइन होंगी उतने अमाउंट में ये चीज़ें कम होंगी लाइक न्यूक्लियर वेपन्स कम होंगे टू यू नो हैव अ बेटर पीस काइंड ऑफ अ सिचुएशन ताकि कोई भी देश के पास हद से ज़्यादा न्यूक्लियर पावर ना हो इसके चलते ये ट्रीटी बनाई गई थी रियल में इसके 2 ट्रीटी साइन हुए हैं मतलब स्टार 2 तक बात पहुंची है इस वाले गेम में दे आर टॉकिंग अबाउट स्टार 3 जहाँ पे कैम्पल बताता भी है कि स्टार 2 के हिसाब से हम लोगों ने न्यूक्लियर रिसर्चर्स या न्यूक्लियर वेपन्स अभी तक कम नहीं किए या न्यूक्लियर वेस्ट अभी तक मैनेज नहीं किया कि स्टार 3 करना तो लाइक मुश्किल ही हो जाएगा और इन सब में से अगर लोगों को पता चल गया अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ मेटल गियर रेक्स तो वो तो लाइक होगा ही नहीं लाइक यूएस की बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी सो इसलिए दे वांट टू यू नो मेक श्योर कि लिक्विड एक्चुअली डजंट रिलीज मेटल गियर रेक्स उसके ऊपर यूएस एक्चुअल में उनकी मांगे मान भी नहीं रहा क्योंकि दे डोंट वांट टू लूज बिग बॉस की बॉडी अब बिग बॉस की बॉडी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है इसका पता अपने को एक्चुअल में मेटल गियर सॉलिड 4 में चलेगा आई नो इट्स वेरी यू नो कॉम्प्लिकेटेड एंड शिट बट इट गेट्स वेरी पूरी स्टोरी ही कॉम्प्लिकेटेड में क्या बताऊँ
बट या टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अभी सच्ची बताऊँ तो मेटल गियर सॉलिड 4 में होता क्या है मेरे को कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने वो गेम खेली नहीं है। एंड वो बॉडी का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है वो मेरे को खुद को भी नहीं पता, क्योंकि मेटल गियर सॉलिड 4 एक्चुअली टेक्स प्लेस अराउंड दैट बॉडी एंड स्टफ, कॉमोटोस बॉडी। बट या नॉट गोना स्पॉइल दैट मच। बट यहाँ पे आके नॉर्दर्न हैंगर के लाइक न्यूक्लियर फैसिलिटी के हैंगर में आके यहाँ पे आके यू हैव टू पिक अप अ बॉडी आर्मर नाउ दैट यू हैव अ लेवल 6 कार्ड। एक्चुअल में वो यहाँ पे नहीं है, वो लेफ्ट साइड पे है। इक्विप योर शैक ग्रेनेड्स एंड गो हियर एंड थ्रो इट जस्ट लाइक दैट। या स्विच टू योर लेवल 6 कार्ड, यहाँ पे आओ एंड यहाँ पे बॉडी आर्मर ले लो। दैट्स ऑल, इतना ही अपने को चाहिए यहाँ से। एंड जस्ट गो बैक दैट यू हैव अ लेवल 6 कार्ड, पिक एवरीथिंग। ओके, जितना भी चीज़ें तुमको चाहिए वो ले लो। स्पेशली मेक श्योर टू पिक स्टन ग्रेनेड्स, ओके, जो अभी B1 में मिलेंगे अपने को यहाँ पे इसी बिल्डिंग के B1 फ्लोर पे। ये B2 है आई गेस, आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज अ B2। या लेट्स गो टू B1। वहाँ पे जाके मेक श्योर टू पिक अप एवरीथिंग। यू विल आल्सो फाइंड अ मेडिसिन ओवर देयर जो एक्चुअल में तुमको मदद करेगी। अभी मेडिसिन क्यों, यू आर जस्ट गोइंग टू फाइंड आउट जब मैं यूज़ करूँगा उसको। बेसिकली वो बीमार हो जाता है एक पॉइंट पे, बीमार मतलब सर्दी लग जाती है उसको, बट लाइक दैट्स इनसेन। यहाँ पे वो मेडिसिन उठा लो। बढ़िया, द क्रेजी लिटिल मैकेनिक्स राइट जो कोजिमा ने डाले इसमें भाई से, लाइक 1998 के हिसाब से अगर सोचो तो बहुत ही एडवांस्ड सोच है। एंड बाय द वे, मैं इतनी जो डीप कहानी बता रहा हूँ, इट इज़ नॉट फॉर दिस, लाइक उन्होंने ये सब सोच के पहले से ही सोच के नहीं रखा था। उन लोगों ने जैसे टाइम जाए वैसे उन लोगों ने एडवांस की है। मैंने अभी, क्योंकि सारी गेम्स मैंने खेल के रखी है, मैं अभी सब चीज़ें बता रहा हूँ। बट एक्चुअल में इस वाले गेम में इतना डीप नहीं है स्टोरी। इट्स जस्ट अबाउट लिक्विड विद हिज गैंग, एक्स फॉक्स हाउंड की गैंग जो है, ग्रुप जिनको सन्स ऑफ बिग बॉस कहते हैं, वो बेसिकली एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का रूप ले लेती है। दे स्टार्ट टू अटैक the US government, they threatened to attack US government using the Metal Gear Rex program जो US government ने छुप के बनाया था दुनिया से। So yeah, that's basically it. And government को actual में सिर्फ और सिर्फ सॉलिड स्नेक को भेजा होता है, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड स्नेक को रोकने से, ताकि वो दुनिया के सामने मेटल गियर रेक्स का राज ना खोल सके। दैट्स इट, दैट्स द होल गेम, वही पे। बट मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे क्यों रहा हूँ, क्योंकि आगे ये बहुत प्रोग्रेस होता है। वाई द गवर्नमेंट वॉज एक्टिंग दिस सस्पिशियस, या फिर वाई एक्चुअल में लिक्विड स्नेक खुद इतना इरेडिकली क्यों बिहेव किया अगेंस्ट द यूएस, और लाइक उसके क्या खुद के मोटिव्स थे। उसके ऊपर ऑसलॉट खुद एक कैरेक्टर इतना इंटेंस है, उसके खुद के बहुत सारे लेयर्स है। यू कैन सी नायोमी हंटर जो अभी भी है ना, दो चेहरे लेके चल रही है। लाइक शी इज ऑलवेज सरप्राइज्ड व्हेन सॉलिड स्नेक शोज एनी काइंड ऑफ काइंडनेस। ओके, वो लाइक सरप्राइज हो जाती है कि ये बंदा इतना काइंडनेस दिखा के सकता है। इसका मतलब उसके दिमाग में इसका बहुत ही गंदा इमेज है। अभी वो गंदा इमेज कहाँ से आया? ऑल ऑफ दिस थिंग्स विल बी एक्सप्लेन्ड लेटर ऑन इन द गेम, बट या इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड गेम इन टर्म्स ऑफ स्टोरी। तो अगर ये सब कुछ समझाने जाएंगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। बट या राइट नाउ जस्ट एंजॉय द गेम। अभी अपन वापस जा रहे हैं उसी स्पॉट पे जहाँ पे मेरिल को गोली लगी थी, एंड वहाँ पे अपन जाके गेम एंड करेंगे, मतलब वीडियो एंड करेंगे। दिस वाज द प्रिजन एस्केप बाय द वे। नेक्स्ट विल बी नेक्स्ट एपिसोड वी विल बी टेकिंग डाउन हाइंड डी जो हेलीकॉप्टर जो हम लोगों ने गेम के स्टार्टिंग में देखा था, जिसको लिक्विड चला रहा था, जिसकी मदद से उसने 2 F-16 जहाज अपने यूएस के गिरा दिए थे। तो या वी आर गोइंग टू फाइट दैट हेलीकॉप्टर, मैंने पहले पार्ट में भी बोला था। एंड या वी आर जस्ट गोइंग टू हैव अ ब्लास्ट।
Save your strength. I was a fool. I wanted to be a soldier. But war is ugly. There's nothing glamorous about it. Snake, please save yourself. Go on living and don't give up on people. Don't forget me. Snake, about Meryl. Colonel, I'm sorry. Listen to me. I wasn't able to protect her. Snake, she's a soldier. She knows that prisoners are a part of war. She joined up of her own free will. I'm sure she was prepared for this. No, you're wrong. Meryl thought she had to become a soldier. Thought it was the only way. She said she thought it would bring her closer to her dead father. She said that? She wasn't ready for real combat. I shouldn't have pushed her so hard. It's all my fault. It's not like you, Snake. Master, what is it? Sorry for eavesdropping, but I just couldn't listen anymore. Master. Snake, you can have regrets if you want to. It's only natural. But you can't keep attacking yourself for things that happened in the past. That road leads to madness. Believe me. He's right. Don't kick yourself. It doesn't suit a legend like you. I'm sure Meryl's just fine. Mei Ling. Snake, forget about Meryl. Stop Liquid. That's what Meryl would want too. You're right. Meryl would say the same thing. Snake, What? Meryl. She's pretty special to you, huh? Yes, she's special. There aren't many women like her around. That's not what I meant. She's the Colonel's niece and a combat buddy. Is that all? Come on. This is like a police interrogation. No, I guess it's in the genes. The genes? What are you talking about, Colonel? No, I just remembered about Naomi's grandfather. I think Naomi said he rose as high as assistant secretary in the FBI during Edgar Hoover's time. Is that right? Yes. Yes, he was Japanese, and he became a special undercover investigator to nab the mafia. When was that? Oh, sometime in the 50s, I guess. Where? New York, I think. Naomi, I thought you didn't have any family. Well, I researched it after I became an adopt. My grandfather was already dead by the time I learned about him. I never even had the chance to meet him. Oh. Snake, good luck. Watch your back, Snake. तो मास्टर मिलर को पता चल चुका है कि नायोमी इज एक्टिंग वियर्ड. मास्टर मिलर इज वेरी टैलेंटेड गाय बाय द वे. ही इज वन ऑफ सॉलिड स्नेक्स बेस्ट फ्रेंड. अगर तुमको नहीं पता तो मेटल गियर सॉलिड अगर तुम 5 खेलोगे जहाँ पे वी आर प्लेइंग एज वेनम स्नेक, तो वहाँ पे यू कैन एक्चुअली सी, क्योंकि उसमें है काजुहिरा मिलर नाम है उसका उसमें, एंड इज वन ऑफ द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ स्नेक. अगले वीडियो में वी विल बी मेकिंग आवर वे टू द कम्युनिकेशन टावर, जहाँ पे वी विल फाइट द हाइंड डी हेलीकॉप्टर फाइट होगी. एंड उसके बाद बेसिकली वाइल मेकिंग आवर वे थ्रू वी विल आल्सो फाइट स्नाइपर वुल्फ. और ऑटोकॉन का भी देख लेंगे क्या सीन चल रहा है उसका. पागल सा प्यार में गिरा हुआ है उसके स्नाइपर वुल्फ के, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड क्लीशे. बट या लेट्स सी, अगले वीडियो में देखते हैं. तब तक के लिए पीस, बाय बाय.